Hello and namaste. Welcome to my channel Mummy the Dhaba. Mummy the Dhaba में आपका स्वागत है. Now today we'll be making something which is tasty and a main course dish. It is very delicious. आज हम लोग ऐसी चीज़ बनाएंगे जो एक मेन कोर्स भी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है. So today we'll be making Penang curry. आज हम लोग बनाएंगे Penang curry. ये करी जो है this is typical of Thailand, from a place of Penang. It originated from there, but now it's loved all over the world. ये करी पेनांग जगह से जो थाईलैंड में है वहाँ से शुरू हुई और अब ये पूरी विश्व में बहुत ही अच्छा डिश है और बहुत ही स्वादिष्ट है और सबको बहुत पसंद आता है. So let's see what all ingredients we need for a Penang curry. First of all, as the name suggests, we need the Penang curry paste. सबसे पहले हमें Penang curry paste चाहिए. And we need coconut milk. Coconut milk भी हमें चाहिए. We need green capsicum. And I've got this chicken which is partially boiled, coriander and lemon leaves. हमारे पास क्या है? हरा शिमला मिर्च, आधा पका हुआ चिकन, हरी धनिया और नींबू वाली घास. So first of all what we will do is we will light our gas and we'll put our pan on it. After that we'll be taking our coconut milk which I have already cut and I'll be emptying the contents into the pan. Coconut milk makes the dish very tasty and creamy. अब जो मेरे पास कोकोनट मिल्क कटा हुआ था उसको मैंने पैन में खाली कर दिया है. इसको डालने से बहुत ही स्वाद आता है, बहुत ही क्रीमी हो जाता है खाना. उसके बाद जो है ये पेनांग करी पेस्ट. Now I will add the Penang curry paste which I have already cut open. This will add to the flavor and this is available at all the supermarkets everywhere. You can get it online also. There are different companies which you have. I have got the one which is the original Thai. This paste has everything in it, salt and other ingredients, so you don't need to add anything unless you take lots of salt or you are very fond of very lots of chili. This curry resembles the red Thai curry also, but there's a slight difference in both of them, that this curry has a slightly sweet and sour taste. It has a tangy taste and the red Thai curry does not have that tangy taste. Now I'll mix this and I'll reduce the flame to medium. Now you have to mix this. इस करी में थोड़ा सॉल्टी और थोड़ा खट्टापन दोनों होता है. रेड थाई करी की तरह होता है, मगर रेड थाई करी में जो है खट्टापन नहीं होता है. अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. We'll add a little of water. I am making it of chicken. Today I am making Penang curry with chicken. This can be made with vegetables also. You can use different veggies, whichever one you want. And you'll have to let them put all of them later. Add the veggies later. इसको आप सिर्फ सब्जियों से भी बना सकते हैं, मगर पूरी ग्रेवी पकने के बाद सब्जियां ऐड करिएगा, नहीं तो वो सब सॉगी हो जाएंगी. You have to add the vegetables later if you're making a vegetable Penang curry so that the vegetables don't lose their crispiness. Now I just cover it and let it cook for 5 minutes. In the meantime, I'll be slicing the capsicum into thin slices and the coriander and the lemon leaves. जब तक जो हम शिमला मिर्च, धनिया और अपने लेमन के घास को हम थोड़ा काट के रखेंगे जब तक ये खौल जाता है. Now we'll check it. Now our curry is boiling. We'll put it on sim, the gas flame, and now we'll add our chicken pieces. I have semi-boiled the chicken. You can put raw chicken also. If you put raw chicken, then you must add some more water and cook it until the chicken is soft and tender. So now I'll be cooking it for 5 to 10 minutes. मैंने इसमें आधा उबला हुआ चिकन डाला हुआ है. आप कच्चा भी डाल सकते हैं, तो फिर आपको पानी भी डालना पड़ेगा और ज़्यादा देर पकाना भी पड़ेगा. अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे so that our chicken gets cooked properly. थोड़ी देर so that हमारा चिकन अच्छे से पक जाएगा. तो थोड़ी देर अब सिम पे इसको हम पकने देंगे. We'll let it cook on sim. Now we'll check our curry. It has been cooking for so long. अब हम अपनी करी चेक करेंगे. अब चिकन इसमें पक गया है. The chicken is cooked. Now we'll add our veggies. We're adding the green capsicum. And there's one more difference between the Penang curry and the red Thai curry. The red Thai curry is red in color and the Penang curry is yellow in color, as you can see. Now we'll increase the flame, let it boil once, and then our dish is ready for plating. अब ये करी में और लाल थाई करी में एक डिफरेंस है कि लाल थाई करी जो है लाल होती है और पेनांग करी
पीली होती है। और इसमें अब हमने अपने कटे हुए शिमला मिर्च डाल दिया है, एक उबाल आने देंगे। अब हमारी करी जो है, पेनांग करी तैयार है प्लेटिंग के लिए। हमने गैस को बढ़ा दिया है। 1-2 उबाल के बाद बस हम इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर प्लेटिंग करेंगे। नाउ आई विल स्विच ऑफ द फ्लेम because the vegetable is cooked and I don't want to lose the crunchiness of the green veggies. So now I'm switching off the gas. Now it's ready for plating. अब जो है हमारी सब्जी प्लेटिंग के लिए तैयार है। I will be transferring it to a bowl and we'll be garnishing it with coriander leaves, lemongrass which is sliced very thinly, and red chilies which is also sliced very thinly. Now here is your Penang curry. हमने इसको गार्निश कर दिया धनिया, लेमन ग्रास की पतली पतली और लाल मिर्ची से। अब देखिए आपकी पेनांग करी तैयार है। It's looking very delicious. The aroma is very nice and it's just ready. And this goes very nicely with rice. You can have it with plain steamed rice or jasmine rice, or you can have it with naan or chapati or roti, or even with bread or loaves, whichever you like. So here is your Penang curry, ready to have, ready to eat, hot and tasty, looking yummy. Enjoy it with your friends, family. It's a main course dish. It can be had for a party or any time at home. Here is your Penang curry. आपकी पेनांग करी आपके समक्ष पेश है।